Mine is done. If you could, or Amit sir or Nimit or Priyanka can answer, what about IPOs that we were talking about? Like, should we invest in IPO or not? And what are the factors to be considered? See, the simple thing is you can always invest in IPOs. मैं खुद नहीं करता वो बात अलग है, बट कोई और भी ना करे वो बात नहीं है. मैं सजेस्ट करता हूँ अच्छा IPO हो तो. इट इज वेरी सिंपल. तुमको अगर 15-20% रिटर्न वन शॉट में मिल रहा है तो तुम क्यों नहीं लोगे? दैट माइट बी इम्पैक्टिंग योर फाइनेंशियल पोजीशन ऑल्सो, कि भाई अच्छा हुआ तो मेरा 10-15 हजार का मेरा ग्रोथ हो रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं. जिसको उससे फर्क नहीं पड़ रहा वो शायद नहीं भी करे. सो मैं बताता हूँ, द लास्ट IPO विच आई इन्वेस्टेड वाज अडानी विल्मर. हुआ 1 महीना रखा फिर एक्सिट. होता है क्योंकि उसके पहले जो भी वो लोग देते हैं, लाइक वी केम अप विद अ लॉट ऑफ IPOs हमारे दूसरे डिवीजन में. सो अ लॉट ऑफ IPOs जो आते हैं उसमें यू एक्चुअली डोंट गेट द करेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी उन लोगों ने बना रखे होते हैं. दे एक्चुअली हैव एन एंटायर टीम दैट डिजाइन्स दो स्टेटमेंट्स. तो तुमको एक्चुअल रिपोर्टिंग भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं है. इट्स जस्ट कि इफ यू आर गोइंग फॉर एन IPO तो ग्रे मार्केट प्राइस इज द थिंग दैट यू हैव टू चेक. ग्रे मार्केट प्राइस कितना चल रहा है तो वही आपको प्रीमियम मिलेगा. अच्छी अच्छी कंपनीज भी प्रीमियम पे नहीं खुलती है और बहुत खराब कंपनीज भी 100-200% रिटर्न देके निकल जाती है IPO पे. तो वो एक प्योर गैम्बल ही है. बट इफ यू एक्चुअली हैव टू रिसर्च तो चित्तौड़गढ़ करके साइट है जिसपे ग्रे मार्केट प्राइस पता चल जाता है. So you could go in. Was anyone here like active when DMart's IPO came? Did anyone invest? नहीं, DMart के टाइम पे तो मुझे आइडिया भी नहीं था. I was not literate enough to invest in DMart at the time of IPO. Actually, I was lucky to got all the IPOs. I don't know how. ऐसी सिचुएशन में हर बार मैं आगे क्यों आ जाती हूँ. तो मेरे ऐसे भी IPO लगे जो मुझे बहुत बैडली, जिसका कुछ था ही नहीं ग्रोथ, वैसे भी IPO लगे और अच्छे भी IPO लगे. जैसे कि HDFC के भी सारे लगे थे, रूट मोबाइल, ये डीमार्ट आपने बोला, मेरे सभी लगे. LIC भी लगा उसमें. अभी उसमें मैं तो माइनस जा रही हूँ. सो आई डोंट नो, बट या ये चीज है कि मैंने मेरी जर्नी पर्सनली IPO से शुरू की थी और ऐसे मैं लकी रही, फॉर्चुनेट इनफ कि अच्छे अच्छे IPO लगे तो मेरा पोर्टफोलियो फिर बढ़ता गया. वो IPO का मैंने जो पैसा उसमें से निकाल के फिर मैंने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया और ऐसे मैंने मेरा पोर्टफोलियो बिल्डअप किया है. सो ये एडवांटेज भी हुआ IPOs का. Just I want to discuss. There was once upon a time an exchange called OTCI, Over the Counter Exchange of India. Maybe many people may not. It still exists, sir. It still exists, sir. So I invested in the IPO of a company called Vijeta Audio World. The promoter was Dharmendra, Sunny Deola, and the family, and they were in the business of making audio cassette, recording of the audio cassette. At that time, the audio cassette recording was also good business. So मैंने सोचा यार, everybody is using audio cassette and these people are recording. So मतलब job work करते हैं और धर्मेंद्र की कंपनी है तो मतलब आंख बंद करके मतलब IPO लगा दिया. वो शेयर्स भी अलॉट हुए, वो कंपनी भी चली, थोड़ी देर के बाद वो गायब भी हो गई, डिलिस्ट भी हो गई, व्हाटएवर. मतलब मेरे हाथ में कुछ नहीं आया. So and there was a company called JBM, that was called Jayanti Business Machine. तो मतलब IBM से बड़ा इंस्पायर्ड नाम था. तो भी थोड़ी यार IBM जैसा ही काम कर रही है तो इंडिया का जयंती बिजनेस मशीन, वो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन की तरह, तो वो भी IPO लगा था. बट if my suggestion will be 10% of IPO will give you a good long term return, but 90% you have to be very very careful. And if you do not understand which 10% you have to select, then it's better that you have to be keep little distance away. Because if you see the latest example is the DMart. DMart was a good IPO. It left something on the table for the investor. But most of the IPO, maybe the investment bankers leave nothing on the table for the retail investors. That is what is my personal say.
Nimit can add to it, and and Mukti can add to it. So whenever you go to the investment banker, the banker is never going to say no because it has to earn its fees. Yes. So it will always give the best price, whatever is best for the customer. He will earn after the lock-in period. He might exit. If the company is good, he might stay invested. So currently, I have the data which I have even shared. So in over the last 5 years, uh, if you look at the IPOs that have been coming up over the last 5 years, that were 393 or 400 odd IPOs. 70% of the IPOs, 65-70% of the IPOs are into positive from the date of the listing. The price at which they were listed, they are into positive. But how much CAGR return is the different thing. Whereas 34-35% of the IPOs are down from its listing price also. When we say it is less than the listing price, it straight away means that the capital is eroded So yes, so for if the you investor point of view. If I so have invested 1 lakh rupees, it has gone down 30%. so if you might remember, Astron paper IPO came. It was probably a small cap company. It is a small cap company, I should say. It is one of my friend's relative company, and it was oversubscribed by 248 times. And it is below currently almost 50% of the listing price. Nimit, Astron paper is the same, like Harsh Patel from your class. Yes, same.